حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اب میں گزارش کروں گا پہرے مہمان خاص محترم سائیں فضل سلیمان صاحب فاؤنڈر سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے گزارش کندس تو ہو اچن اے پنجے خیالن جو اظہار کن۔ محترم جناب فضل سلیمان صاحب جی اجازت سے کچھ روح چوان گھراں تھو، کچھ سندھی میں کچھ انگریزی میں۔ تو انگریزی میں مکھے وڌیک تھوڑی روانی ہے، تंहिं करे जेकॾहिं ॿियो त सभु हज़रात जेके वेठा आहिनि उन्हनि जी तमामु घणी अंग्रेज़ शनासाई बि आहे, तंहिं करे इहो मुश्किल कोन थींदो सम्झणु त मां छा थो चवणु घुरां। पहिरियां त मां शुरू कयां थो अलाह तबारक ताला जे नाले सां, जंहिंजी तव्हां सभिनी ते रहमत हुजे, तव्हां ते फैज़ जो दरवाज़ा खोले। ऐं हक़ीक़त करे जेको आहे सो नूरानी साहिबु मुनफ़रिद शख़्स आहे ऐं उन जेको ई कमाल कयो आहे जो इंटेलेक्चुअल फोरम ठाहियो अथई ऐं उन जा फंक्शन्स करे रहियो आहे ऐं उन जा जेके से डायलॉग क़िस्म जो सिलसिलो शुरू कयो अथई। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ रेयर फिनोमिना and I'm extremely grateful to him and to all of you that you have given me an honor and kind of a prestige which is very rare in a country like Pakistan. I'm among the Sindhis. Who cares, Fazal Qazi, if he has written 8 books or 10 books? Nobody cares about it. But there are people, that means we are a living community and we shall still live and we shall survive and we shall go forward. And Noorani is one of them, that he has taken the trouble of inviting all of you and conferring me a kind of an award, which I am grateful. And also, let me tell you that Noorani is really a great man. Great in the sense that he recognizes the talent and recognizes the people of Sindh who have made some contribution in their own respect ways. And he wrote a great article on me, which is published in this book. And I must say, it's kind of a rare book, kind of a narrative that Noorani has written. And if you have any opportunity of getting this book, please read Mr. Noorani's that narrative, in which really he has said so many things. And permit me to say and to acquaint you for the few books that I have written. In fact, in my life, I have invested my time in reading and writing and not wasting on other things. And among them, the first book I wrote was Law and Politics in Pakistan back in 1975. And that I had dedicated to Mr. Zulfikar Ali Bhutto. And in the later years, when I was the senior executive vice president in the National Bank of Pakistan, the martial law, Zia's martial law came in being, and some of the mischievous people in the bank wrote them that Mr. Fazal Qazi is related or somewhat interested in Mr. Bhutto. So they sent a martial law regulation to demote me from my position, and I was the only Sindhi in the entire National Bank of Pakistan holding that position. So there are many things that happen to Sindhis. Sometimes, you see, but we do not try to tell people. It is time that you must share with other people what is happening to you, so that we should take corrective measures. Another book is Incense and Echoes. This is kind of a compilation of many articles on this. And third book is on law. That is discretionary power, which will be of great interest to you. And next book is the Handbook of Banking Terms. It's a dictionary of banking. And after that is Banks and the Executive Leadership. That's another book. English book, Sindh, The Rustling Leaves, is pending for publication. And same is the case with political process and foreign policy of Pakistan. In Sindhi, I have written few books. One is Sindh and Sindhi, and ॿियो किताब आहे सिंध ऐं पाकिस्तान जो रियासती निज़ाम
ऐं टियों किताबु आहे सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी ऐं मर्कज़ी सियासत। ऐं ॿियो किताबु आहे अंग्रेज़ अमेरिका जा अक्स ऐं ओलड़ा। अमेरिका में मां रहियो आहियां न्यूयॉर्क में बैंक जो चीफ थी ऐं उन खां सवाइ घुमंदो बि रहियो आहियां। सो इहे किताब जेके आहिनि लिखियल आहिनि। हाणे सुवालु पैदा थिए थो त हीउ इंटेलेक्चुअल छा आहे? हक़ीक़त ॿिए दफ़े कॾहिं तफ़सील सां हिते ॻाल्हाइबो। इंटेलेक्चुअल उहो माण्हू आहे जेको इल्म जी तोसी में he tries to promote knowledge, not only knowledge but to expand the knowledge, and he is therefore intellectual. But there are two qualities outstanding that an intellectual must have and possess, and I think everybody is in that case an intellectual. One is to question. You must question me, Mr. Qazi, what are you saying? It is not just so that from questioning comes the enlightenment. And another question is to imagine the things. These are the two fundamental qualities of an intellectual. And the times in which we are living, I must quote some kind of poems for your intellectual stimulation. वो हिकिड़ो अंग्रेज़ी हो मिस्टर जॉन स्केलेटन, उन जी अंग्रेज़ीअ में आहे पोइम सो मैनी गुड लेसन्स, सो मैनी गुड सरमन्स। या त असांजे हिन मौजूदु निज़ाम हुकूमत ऐं जेका गवर्नेंस जो सिलसिलो आहे जेको मुल्क में मुरवज ऐं तरीक़ो हली रहियो आहे राय जा, या त उन ते लिखियो अथई। एंड सो फ्यू डिवोशन्स I saw never, so many wrongs, so many songs, few merry songs. का बि चङाई जी ॻाल्हि कान थी नज़र अचे, रुॻो ॻाल्हियूं कंदा रहनि था, तक़रीरूं कंदा रहनि था, ॿारनि खे ॿुधाईंदा रहनि था। and so many ill tongues, जॾहिं ज़ुबान वां का चङाई कान निकिरंदी उहे ग़लति कंदा था। इहो उनजो चवणु हो। इहो ऐं ॿियो इहो आहे त हिकिड़ो ॿियो पोइटो उन में ज़बरदस्त ॻाल्हि कई आहे, ॼण त पाकिस्तान जे निज़ाम हुकूमत ते ॼण का यानी किसे आहे। उहो चए थो पियो, गॉड गिव अस मैन अ टाइम लाइक दिस डिमांड्स स्ट्रॉन्ग माइंड्स, great hearts, true faith, and ready hands, men whom the lust of office does not kill, men whom the spoils of office cannot buy, men who possess opinions and a will, men who have honor, men who will not lie, men who can stand before a demagogue, tall men, sun-crowned, and live above the fog, in public duty and in private thinking. असांजो जेको निज़ाम हुकूमत आहे या जेको हले थो पियो मुल्क में मुरवज आहे, उन में चापलूसी, ख़ुशामत, फ्लेटरी, कूड़ बदूड़ ऐं पंहिंजे नंढनि नंढनि फ़ाइदनि जे लाइ केतिरियूं ॻाल्हियूं असां कयूं था जेके कैरेक्टर जी ॻाल्हि कान्हे, कैरेक्टर जी बिल्डिंग कान रही आहे। ऐं जेको कैरेक्टर वारो माण्हू आहे उनखे वरी माण्हू पासीरो करे था छॾनि, पोइ चाहे उहो नौकिरीअ में हुजे या चाहे उहो कंहिं ॿिए कम में हुजे। पर वक़्तु अची वियो आहे त सच चवण जी ॻाल्हि ज़रूरत आहे ऐं उथी बि अचण जी ॻाल्हि आहे, हक़ जी ॻाल्हि करण जी ज़रूरत आहे। ऐं जन माण्हुनि सां ज़ुल्म तशद थिए थो, उन्हनि जी इमदाद करण जी ज़रूरत आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि आहे त असां सिंधियुनि में इतफ़ाक़ ऐं इतिहाद पैदा करिणो आहे, तमामु उहो घटि आहे। इहा ॻाल्हि जेका त मूं महसूसु कई आहे ॿियनि क़ौमुनि में वधीक आहे, ॿियनि क़ौमुनि में तमामु घणी आहे, उहो हिक ॿिए खे तमामु वेझो अची मदद कनि था। असां ठीकु आहे जेको आहे सो हलंदो रहंदो, ईअं न आहे। ऐं उनखां सवाइ हिकिड़ो ॿियो बि आहे शहर जेको फैज़मंद फैज़ चयो आहे,
उहो बि ॼणो असांजे हिन माहौल ऐं हालतुनि ते सां मुंसलिक आहे ऐं मुनासिबु आहे। उहो चए थो त स्पीक अप, ॻाल्हाए, उथी बि ॻाल्हाए, प्लीज़ टॉक, प्लीज़ स्पीक। फैज़ तर्जुमो आहे अंग्रेज़ीअ में, स्पीक अप फॉर यूर लिप्स और नॉट सील्ड। तुंहिंजा जेके लब आहिनि उनखे सील कोन कयो आहे, उन ते का पाबंदी कान्हे का, ॻाल्हाए। एंड यूर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन। तुंहिंजी गुफ़्तगू, तुंहिंजा अल्फाज़, तुंहिंजा वर्ड्स तुंहिंजा पंहिंजा आहिनि, सो ॻाल्हाए। दिस अपराइट बॉडी इज़ योर्स। हीअ जेको मुंहिंजो शख़्सियत आहे उहा मुंहिंजी पंहिंजी आहे। स्पीक अप नाउ फॉर टाइम इज़ रनिंग आउट। वक़्तु वञी रहियो आहे, इट इज़ फेडिंग आउट, इट इज़ फ्लीटिंग आउट, दिस इज़ अ टाइम, it is drifting out, the time is drifting. So it is time that we must stand up and speak before your body and mind fades away. जेसि ताईं तव्हां ज़िंदा आहियो, तव्हां में अल्लाह ताला उहा क़ुवत ॾिनी आहे, तेसि ताईं ॻाल्हायो, न त इहो वक़्तु ईंदो जो तव्हां हलिया वेंदो। लेटेस्ट ट्रुथ इज़ नॉट येट डेड। ऐं इहो असांखे चवणु खपे त सच अञा सालिम आहे, उहो ख़तमु न थियो आहे। सो इहे चंद फ़िक्र हुआ जेके मूं तव्हां सां पेश करण पियो घुरिया। ऐं मज़ीद इहो आहे त मां तमामु मशकूरु आहियां जेको मसूद मुरानी साहिब जो उन इज़त अफ़ज़ाई कई आहे, क़दुरु शनासी कई आहे, सम्झो न। हिते हिन असांजो जेको आहे लैंड ऑफ डेज़र्ट, इंटेलेक्चुअल डेज़र्ट आहे, जंहिंमें केरु कंहिंखे पुछे ई कोन थो केरु छा थो करे छा नथो करे। मां तमामु मशकूरु आहियां, हुन तमामु वॾी महिरबानी कई आहे ऐं जो इज़त अफ़ज़ाई कई आहे सभिनी दोस्तनि खे, तव्हांखे तकलीफ़ ॾिनी अथई ऐं मूं नाचीअ खे एॾी इज़त अफ़ज़ाई कई अथई हक़ीक़त करे। सो इन लिफ़ाज़ सां मूंखे वधीक कुझु न आहे चवणो, पर मां बहितर इहो सम्झंदुसि जीअं साईं मलिक साहिबु फरमायो त सुवाल जवाबु कयो त उन में छा आहे इंटरेक्शन थो थिए, हिकिड़ो डायलॉग हुअणु खपे त हीउ माण्हू छा थो सोचे, छा आहे हिनजी कहिड़ी इल्मियत आहे, या कहिड़ा हिन जा ग़लीज़ ख़्याल आहिनि या नेक ख़्याल आहिनि, उनजी परूड़ थिए ऐं इन नमूने सां हिकिड़ो इल्म जी तोसीअ थिए, शऊर जी तोसीअ थिए। सो मां मशकूरु आहियां तव्हां दोस्तनि खे चयो। सो जेकॾहिं के सुवाल आहिनि तव्हांखे पुछणा हुजनि मुंहिंजे ज़िंदगीअ मुतालिक़, मूं ज़िंदगीअ में हादसा बि थियनि था, केतिरा मामला बि थियनि था ऐं कुदरत जा अहसान बि थियनि था ऐं रस्ता बि खुलनि था, तंहिंजे करे जेको को सुवाल हुजे उन में बेफ़िक्र थी तव्हां सुवाल करे सघो था।